ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य पञ्चाशः सर्गः। रावणकर्तृकः प्रहस्तद्वारको हनुमन्तं प्रति लङ्कायाम् आगमनप्रयोजनस्य प्रश्नः। हनुमता रामदूतत्वेन आत्मनः परिचयदानम्। Today we read chapter 50 of the Sundarakandam, which has 19 verses. Commanded by Ravana, Prahasta inquires of Hanuman as to who he was and also his motive in devastating the royal pleasance and killing the ogres. In reply, Hanuman says that he destroyed the grove in order that he might be taken captive and dragged to the presence of Ravana, whom he was eager to see and who compelled in self-defense to kill those who stood in his way. In the end, he declares himself to be a messenger of Sri Rama and adds that though protected against the missile presiding over by Brahma, he submitted to his influence only in order to be able to see Ravana. आज हम सुंदर कांड के 50 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 19 श्लोक हैं। रावण का प्रहस्त के द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछवाना और हनुमान का अपने को श्री राम का दूत बताना। तम् उद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं पुरतः स्थितं रोषेण महता अविष्टो रावणो लोकरावणः। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण बुरी आंखों वाला हनुमान जी के सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। The mighty armed Ravana, who made people cry in distress wherever he went, was seized with violent rage to behold that monkey, a tawny-eyed one, before him. शङ्का हतात्मा दध्यौ स कपीन्द्रं तेजसावृतं किमेष भगवान् नन्दी भवेत् साक्षात् इहागतः। येन शप्तो अस्मि कैलासे मया प्रहसिते पुरा सो अयं वानरमूर्तिः स्यात् किंस्विद् बाणो अपि वासुरः। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया। अतः वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा। क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जबकि मैंने उनका उपहास किया था मुझे शाप दे दिया था, वे ही तो वानर का रूप धारण करके यहाँ नहीं आए हैं, अथवा इस रूप में बानासुर का आगमन तो नहीं हुआ है। His mind overcome with apprehension, he speculated as follows with regard to Hanuman, a leader of the monkeys, who was invested with glory. Is it the glorious Nandi, a leader of the attendants of Lord Shiva, who has come here in presence, by whom I was formerly cursed on Mount Kailasha, the abode of Lord Shiva, when he was mocked by me? Or perhaps he may even be the celebrated demon Bana, son of Bali, in the guise of a monkey. स राजा रोषताम्राक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमं कालयुक्तम् उवाचेदं वचो विपुलम् अर्थवत्। इस तरह तर्क वितर्क के करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्री वर प्रहस्त से समयानुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बात कही। His eyes bloodshot through anger, the aforesaid King Ravana spoke to Prahasta, the foremost of his ministers, the following opportune, solemn, and significant words. दुरात्मा पृच्छ्यताम् एष कुतः किं वा अस्य कारणं वनभङ्गे च को अस्यार्थो राक्षसानां च तर्जने। अमत्य इस दुरात्मा से पूछो तो सही, यहाँ कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है, ब्रह्मदावन को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने में इसकी क्या उद्देश्य था।
Let this evil-minded fellow be asked where he has come from, what is his motive in coming here, nay, what was his object in destroying the grove as well as in threatening the ogres. मत्पुरीम् अप्रदृश्यां वै गमने किं प्रयोजनम् अयोधने वा किं कार्यं पृच्छताम् एष दुर्मतिः। मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है, इसमें इसका क्या प्रयोजन है, अथवा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है उसमें उसकी क्या उद्देश्य है, ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि वानर से पूछो। Let this perverse fellow be asked what really is his purpose in actually coming over to my city, which cannot be taken by storm, or what is his object in seeking an encounter with our people. रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यम् अब्रवीत् समाश्वासिः भद्रं ते न बीहि कार्यात् त्वया कपे। रावण की बात सुनकर प्रहस्तन ने हनुमान जी से कहा, वानर तुम घबराओ ना, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। Hearing the command of Ravana, Prahasta spoke to Hanuman as follows. Take heart, O monkey, may God betide you. No fear need to be entertained by you. यदि तावत् त्वम् इन्द्रेण प्रेषितो रावणालयं तत्त्वम् आख्याहि मा ते बोध भयं वानर मोक्ष्यसे। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की संगरी में भेजा है तो ठीक ठाक बता दो, वानर डरो ना, छोड़ दिए जाओगे। If for that matter you have been sent to the abode of Ravana by Indra, pray speak the truth, O monkey. Let no fear haunt you. You shall be liberated. यदि वैश्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य च चारुरूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीम् इमाम्। अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो तो ये सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो ये भी बता दो। Tell us if you are a messenger of the gods of riches, Kubera, the son of sage Vishrava, Yama, the god of retribution, or Varuna, the god of water, and have deeply penetrated into this city of ours, having assumed the disguise of a spy. विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकांक्षिणा न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम्। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है, तुम्हारा तेज वानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। Or tell me if you are an envoy dispatched by Vishnu who is longing for conquest. Surely your prowess is not like that of a monkey, your form alone, for that matter, is that of a monkey. तत्त्वतः कथयस्व अद्य ततो वानर मोक्ष्यसे अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम्। वानर इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। Correctly communicate this today, then you shall be set free, O monkey. On the other hand, it will be difficult for you to survive if you tell us a lie. अथवा यन्निमित्तः ते प्रवेशो रावणालये एवमुक्तो हरिवरः तदा रक्षो गणेश्वरम् अब्रवीत् न अस्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च धनदेन न मे सख्यं विष्णुना न अस्मि चोदितः। अथवा और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर उस समय वानर श्रेष्ठ हनुमान ने राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ, कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है, और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। Or simply let us know the motive of your penetrating deep into the abode of Ravana. Interrogated in the foregoing words on that occasion, Hanuman, the foremost of monkeys, submitted as follows to Ravana, the lord of the ogre hordes. I am neither a messenger of Indra, the ruler of the gods, nor of Yama, nor of Varuna, nor does my friendship exist with Kubera, the bestower of riches, nor have I been dispatched by Vishnu. जातिरेव मम तु एषा
वानरो अहमिहागतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तदितं दुर्लभं मया वनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थं विनाशितं ततस्ते राक्षसाः प्राप्ता बलिनो युद्धकांक्षिणः। मैं जन्म से ही वानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। I am a monkey by my very birth, and as a monkey alone have I come here for the sight of the king of ogres. Nay, this well-known and rare grove of the king of ogres has been laid waste by me merely for the sake of obtaining a sight of Ravana, the king of ogres. रक्षणार्थं च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे अस्त्रपाशैः न शक्योऽहं बद्धं देवासुरैः अपि। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पाश में बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। Thereupon came those mighty ogres looking for an encounter, and in self-defense they were met by me in the field of battle. I am incapable of being bound with the missiles and nooses of gods and demons. पितामहात् एष वरो ममापि हि समागतः राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रम् अनुवर्तितम्। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बांधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। A boon to this effect has actually been won by me from Brahma, the progenitor, even of the Lord of creation. The missile was respected by me only because I longed to see the king. विमुक्तो अपि अहम् अस्त्रेण राक्षसैः तु अभिवेदितः केनचित् रामकार्येण आगतो अस्मि तवान्तिकम् दूतो अहम् इति विज्ञाय राघवस्य अमितौजसः श्रूयताम् एव वचनं मम पत्यम् इदं प्रभो। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। Though completely set free by the missile, I have been brought and announced to you as if I was still bound with the missile, spurred on by some mission of Sri Rama, have I sought your presence. Recognizing the fact that I am an envoy of Sri Rama, who is endowed with limitless energy, let this salutary advice of mine be definitely listened to, O Lord. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 50 शब्दः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 50 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।